Hello, my dear student. Hope you're fine. Welcome you in this lecture number 46. In the last lecture, we have studied one of the very important article from this topic. That is mechanism of SN2 reaction. And next we have to learn mechanism of SN1 reaction. So I have given the example, two parts I have given A, B, C. You might be watching here number C, mechanism. Number A is the net reaction or the example. What example we have seen for this SN2 reaction? That is alkaline hydrolysis of bromomethane, where bromomethane reacts with OH minus from KOH or NaOH aqueous and produces methanol. That net reaction do refer. And why it is called as second order reaction SN2? Because two reactant molecules, both the reactant molecules are taking part in the slowest part of reaction. That's why it is given SN2. So do watch that. Okay. Now we have to learn the mechanism of this. What is the mechanism exactly? Okay. Mechanism means the detailed step-by-step description. So here to learn that entire process in the stereochemical aspect, I have written the tetrahedral model of this bromomethane. The structure which you have shown, that is not written in the single plane, but you know tetrahedral is a three-dimensional structure. तो थ्री डायमेंशनल है तो हमने पहले इसका लर्न किया था एक्चुअली 11th में. That what does it indicate? Solid wedge indicates that the group or the atom is present above the plane of paper. यहाँ पे above the plane of board. ये जो सॉलिड वेज आप देख रहे हैं ये इस बोर्ड के प्लेन के बाहर है, यानी यहां पर कहीं तो भी है. इट इज जस्ट आउट ऑफ दैट प्लेन ऑफ द बोर्ड. या आप जब पेपर पे लिखेंगे तो आउट ऑफ द पेपर, वो ऊपर वाली साइड में. एंड देन दिस डैश्ड लाइन इंडिकेट्स दैट दैट एटम और ग्रुप इज प्रेजेंट इन द बैक प्लेन बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर. यानी इस बोर्ड के पीछे यह हाइड्रोजन आने वाला है, बोर्ड के ऊपर यह हाइड्रोजन आने वाला है. एंड दिस डैश लाइन नॉर्मल इंडिकेट्स दैट दे आर इन द सेम प्लेन. यानी CBRH एक ही प्लेन में है, ये पिछले प्लेन में है, ये ऊपर वाले प्लेन में है. और ये सब ज्वाइन करेंगे तो जो फिगर आएगा उसे कहते हैं टेट्राहेड्रॉन. सो दिस टेट्राहेड्रल मॉडल आई हैव शोन. ट्राई टू लर्न. And now what happens here? OH minus in the beginning, that is nucleophile having negatively charged group there, shows backside attack on the bromomethane, backside attack on the carbon atom of the bromomethane. Okay, backside attack on carbon atom. Okay, bromomethane के कार्बन एटम पे ये बैक साइड से अटैक करेगा. अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. देखो, कार्बन इज वेरी हैविंग मच मोर हैप्पी फैमिली, आई विल से. इट हैज गॉट इट्स वाइफ दैट इज Br, और उसके 3 हाइड्रोजन भी है, 3 बच्चे हैं. ओके, दैट हैप्पी फैमिली एक्चुअली. तो इसको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है. आजकल हम सीरियल्स में देखते हैं, ऐसे सीरियल्स तो नहीं होना चाहिए फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले, पर वहां पे हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल, इजंट इट, मैरिज के बाद होने वाले अफेयर्स. तो वो ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर है. नाउ व्हाट हैपेंड देयर? OH माइनस इज सम ऑफ द दैट डायनामिक एंड एक्टिव न्यूक्लियोफाइल व्हिच कम्स इन कांटेक्ट विद दिस कार्बन. तो कार्बन पे आपने डेरे डालने लगता है ये OH माइनस, और कार्बन भी दैट शोज द अफेक्शन टुवर्ड्स दैट. सो बट सामने से तो नहीं आ सकेगा. अगर सामने से आ गया तो Br है, isn't it? तो सामने से आने खुला खुला तो नहीं आ सकेगा. सो चोरी छुपे वो अटैक कर देता है कार्बन. क्वाइट इंटरेस्टिंग. और Br को मालूम भी नहीं रहता. एंड नाउ स्लोली एंड स्टेडीली वी फाइंड दैट OH and carbon get involved in each other. I will show that with the dotted line, and these are the carbon atoms, and then this is the Br. So obviously Br and carbon bond will get partially broken. कार्बन का जब ध्यान OH की तरफ जा रहा है
तब Br का उसको वो इग्नोर करने लगता है Br को. Obviously the bond between carbon Br start to break simultaneously, and bond between carbon and OH start to get formed simultaneously. But OH भी बहुत clever है. It will not directly form a complete bond with carbon. It will say that first of all break that bond with Br, then I will come there. और ये हाइड्रोजन बच्चों का क्या होता है? They will get pulled away somewhat. और ये ऐसे आ जाएंगे H, H और ये H. Okay. And now remember, this is called as the intermediate transition state or activated complex. Here Br will have delta minus or partial minus charge. OH will have delta minus charge. And this dotted line से ही दिखाना पड़ेगा ये bond. Dotted line is indicating that the bond is partially broken. Okay. Now अब ये partially broken bond है, ये partially formed, simultaneous bond breaking and bond formation. Now this intermediate state is known as transition state. उसे कहते हैं transition state, or that is also called as activated complex. It is also called as activated complex, and that is quite unstable. हम समझ सकते हैं इस दरमियान कार्बन की जो मेंटालिटी होगी वो बहुत डिस्टर्ब होगी, और लेकिन कार्बन का माइंडसेट भी अच्छा नहीं है ना. It don't try to lose Br but want new bond with OH. How it is possible? वो Br को भी छोड़ना नहीं चाहता है और OH के साथ भी नया बॉन्ड बनाना चाहता है. So that is not allowed in our system there, social system and all. Okay. तो कहीं तो भी कौन सा तो भी एक बॉन्ड उसको ब्रेक करना पड़ेगा. Either it will have to break OH and live happily with the Br as in the past, or it will have to kick out Br. कुछ तो भी डिसीजन उसको इमीडिएटली लेना पड़ेगा. ये होता है बहुत स्लोली पहला पार्ट, बट द सेकंड पार्ट ऑकर्स वेरी फास्ट. जब चर्चाएं बढ़ने लगती है, देन कार्बन हैज टू टेक द डिसीजन वेरी फास्ट, and then Br minus bond will be broken. Entire electron pair will come to the Br. अब जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, that this is H. Okay. Then this will be particularly OH will be on opposite side, my friend. OH will be on opposite side. Okay. ये H यहाँ पे आ गया. ये दूसरा H जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया था वो सपोज यहाँ पे आ गया था, डैश लाइन, डॉटेड लाइन. ये डैश वाली लाइन जो है दैट इज फॉर प्लेन बिलो द पेपर. ओके. और ये सॉलिड वेज जो आने वाला है दैट इज अबव द पेपर. ओके. ये तीन हाइड्रोजन वैसे रह जाएंगे, एंड देन this will be the OH bond. Now OH bond will be formed completely, and Br minus nucleophile will be given out. This is known as methanol, final product. तो ये है उसका मैकेनिज्म. ओके. समझ में आ रहा है मैकेनिज्म? बहुत सिंपल मैकेनिज्म है और इंटरेस्टिंग भी. दैट हियर अभी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करेंगे. दैट व्हेनेवर द रिएक्शन स्टार्ट्स, द न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज ग्रुप coming from alkali, will have backside attack on the carbon atom of this bromomethane. It will have backside attack on the carbon atom of this methyl group. Okay, bromomethane. And then a transition state will be formed where we are finding that carbon is bonded with 5 groups. Actually, you know that carbon has valency 4. Carbon can get bonded with only 4 atoms or groups. But in this transition state which is formed now, you will be watching that carbon is joined with 5 groups.
3 हाइड्रोजन एज यूजुअल, 1 Br 1 OH। पर कार्बन कहेगा हम तो 4 ही है टोटल, 3 फुल 2 हाफ, isn't it? 3 फुल 2 हाफ, यानी 2 हाफ कौन से, यानी ये बॉन्ड पार्शियल है, ये बॉन्ड पार्शियल है। What has happened here? There is a simultaneous bond breaking between carbon and bromine, and that simultaneous bond formation between carbon and OH. CBr bond breaks simultaneously with the formation of COH bond. This occurs very slowly, and the transition state where carbon is joined with 5 groups, that is very, very unstable. Okay? And immediately that breaks, CBr bond breaks completely, and then Br minus nucleophile is formed, and COH bond is formed completely to give methanol final product. पर अगर दो स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देखेंगे, मेथेनॉल और ब्रोमोमीथेन, आप देखेंगे ये इनके कॉन्फर्मेशंस जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, उसे कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट। इसके लिए तो मैकेनिज्म दिखा रहे हैं that CBr bond is on this side but COH bond is on opposite side. It's just as like that umbrella getting turned over because of the very large wind velocity. कभी कभी वैसा होता है, isn't it? अम्ब्रेला जो है वो अगर विंड आ गया बहुत ही हाई वेलोसिटी का तो ऐसा उल्टा हो जाता है. So that is called as the inversion of configuration, and therefore this is one of the speciality of what? Of this SN2 configuration. Inversion of configuration, and that is 100%. 100% inversion. उसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं. ओके, वॉल्डन ने ऑब्जर्व किया था. एंड दैट्स व्हाई आगे चल के हम जब ऑप्टिकल आइसोटोप लर्न करेंगे तो बिल्कुल ऑप्टिकल एक्टिविटी भी अपोजिट हो जाती है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही अपोजिट हो गया है. एक अगर डेक्स्ट्रोट्री दूसरा लीवो हो जाता है. सो दैट वी शैल लर्न इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म क्लियरली, व्हाई इट इज कॉल्ड SN2. एंड ये मैकेनिज्म सब्जेक्टिव पेपर में आता है तो वहाँ पे 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है. तो उसमें हमें नेट एग्जाम्पल देना पड़ेगा, काइनेटिक्स देना पड़ेगा, मैकेनिज्म देना पड़ेगा with the description. Okay, so thanks a lot. Do like and share this video and subscribe to my channel Katesar Chemistry and Katesar Chemistry Shorts. Thanks a lot.